चलें जी, let's start with the next one, melting point. Okay, melting point, if I ask you what is melting point, so basically this is the temperature at which a solid is converted to liquid. So this is the melting point. Now, if I talk about melting point, so हमें बात करनी पड़ेगी कि yes, this is sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur and chlorine. argon को हम छोड़ देते हैं, it is in a gas form. melting point तो normally solids के होता है, ठीक है? So from here to here we have metals in which the atoms are held together by strong metallic bonding, ठीक है? Silicon is the metallite. What is the structure of Si? Can I say the Si? इसका जो structure होता है, sorry, metals का structure है giant metallic structure. Okay, silicon is a metallite और इसका structure ये होता है giant molecular structure. It's the same structure as the structure of diamond. ठीक है? Now, from states of matter, we know that phosphorus exists as P4 and sulfur exists as S8 molecule. So these are the typical non-metals and their structure is a simple molecular structure. Simple molecular structure. अच्छा, अब एक बात बताइए मुझे, सबसे पहले हम बात करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम. As I said, they have a giant molecular structure. So what's your idea about their strength of metallic bonding? Sodium से aluminum तक, the strength of metallic bonding should increase or decrease? बढ़ेगी या कम होगी? Now, to explain this, we have to think about कि भाई from sodium till aluminum, how many number of delocalized electrons we have in outermost shell? As the number of delocalized electrons increases, the strength of metallic bonding increases. So can I say that from sodium till aluminum, the strength of metallic bonding क्या होगा जनाब? बढ़ेगी, increases. ठीक है? अच्छा, अब when they ask you why it is increases, तो आप बोलेंगे due to increase in, और शुक्रिया भाई, number of delocalized electron. है ना? फ्री इलेक्ट्रॉन्स और द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ रही है. सो कैन आई से दैट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम सोडियम टिल एल्युमिनियम, आपके पास मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बढ़ जाएगा जनाब मेल्टिंग पॉइंट. ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट melting point increases due to increase in the metallic bonding. और metallic bonding क्यों बढ़ रही है? Because you have more number of delocalized electron present. Then let's move forward. Silicon के बारे में. Now think about silicon. Silicon has the same structure. ठीक है? So it's a giant molecular structure. And because of its giant molecular structure, silicon का melting point among the list highest melting point होगा. Why? Because जो giant molecular compound होते हैं, like diamond, graphite, यानी ना SiO2, they have a very high melting point. So it should have the highest melting point. तो सोडियम से एल्युमिनियम melting point बढ़ रहा है, सिलिकॉन melting point highest है. Now next one, P4, S8 and Cl2. What is the structure? They all are the simple molecular structure. They all have simple molecular structure. ठीक है? In all simple molecular structure, melting point depends, किस पे डिपेंड करता है भाई? On, हाँ, on the extent of intermolecular forces.
ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। और यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन सी है बेटा? वैन डर वाल्स फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स, क्योंकि दे आर द टिपिकल नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड में द स्ट्रेंथ ऑफ their melting point depends on the strength of the intermolecular force, and in this case the intermolecular force is basically the van der Waals force, जिसको हम dispersion force भी कह रहे हैं। Now my question is, dispersion force किस चीज पे डिपेंड करती है? van der Waals force। एक सिंपल से सवाल का जवाब दीजिए। You have P4 and you have Cl2, and if I am asking which of one of these have the highest melting point, or more dispersion forces are present, P4 or S8 और Cl2, तो आप कैसे सोचेंगे? आप बोलेंगे वैन डर वाल्स फोर्स जिसमें ज्यादा होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। वैन डर वाल्स फोर्स डिपेंड्स ऑन द एमआर। If you have higher MR, you have more electron and more van der Waals forces are present. If you remember, हम comparison करते थे ना H2 और Cl2 में, हम कहते थे Cl2 की van der Waals forces ज्यादा होंगी because it has more electrons present, and van der Waals forces is only because of the presence of electron। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? van der Waals force depends on the MR, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास के ऊपर, और डिपेंड्स ऑन द एयर। सो अमंग द लिस्ट कैन आई से दैट दिस सल्फर which exists as a S8 molecule have the highest MR। okay, so इसके अंदर this you have the strongest dispersion forces, जिसको हम van der Waals forces भी कहते हैं, so they have a strongest dispersion forces। So आखिरी बात, as the outcome, it should have the highest melting point। ठीक है, सो सेकंड नंबर पे आपके पास आ जाएगा, सेकंड हायर एमआर है आपके पास फॉर P4, एंड इट शुड हैव द लोएस्ट एमआर, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ द स्मॉलेस्ट एमआर। ठीक है, देखिए इस पर्टिकुलर टॉपिक में दो चीजें क्वाइट क्लियर हुई। एक चीज ये क्लियर हुई कि इफ यू हैव टू कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक बॉन्डिंग और द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स, ओके, थिंक अबाउट द नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्डिंग होगी, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। इफ यू हैव टू थिंक अबाउट द डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ टिपिकल नॉन पोलर नॉन मेटल्स मॉलिक्यूल लाइक फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, think about the MR or AR। If you have a higher MR, more electron, more van der Waals forces and higher। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताइए, एज ए जर्नल मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए नॉन मेटल्स का? मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट इज हायर देन नॉन मेटल, दैट्स व्हाई क्लोरीन इज अ गैस, है ना? और अब कोई भी मेटल, लाइक सोडियम मेटल इज अ सॉलिड, सो नॉट जनरली द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स इज, क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन द वैन डर वाल्स फोर्सेस, सो दैट्स व्हाई ऑल मेटल्स हैव अ हायर मेल्टिंग पॉइंट। इन सारी बातों को सम अप करते हैं, एंड आई एम श्योर दैट इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड यू कैन इजीली रिलेट विद इट। देखिए, नाउ दिस इज द एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। सो यहां पर हम लिख लेते हैं जनाब, यू कैन सी proton number, and here you have a melting point. What should be the unit of melting point? Degrees Celsius. So this is a melting point. Okay, now I'm going to start sodium, yeah, sodium से थोड़ा सा ज्यादा magnesium। अच्छा, there's a little difference between magnesium and aluminum, but aluminum is higher than magnesium, so this is sodium, सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम, एंड मैग्नीशियम से थोड़ा ज्यादा एल्युमिनियम। And now there is someone on the top of the list, and this one is silicon because of its giant molecular structure. Now all non-metals have a lower melting point as compared to this, so this one is basically phosphorus, which is P4। phosphorus से ज्यादा you have sulfur, which is S8,
and the chlorine should be lower than phosphorus. So यहाँ पर this is the melting point of Cl2. ठीक है? Clear? So this is a graph of a melting point. Slightly different graph, but I think I'm sure that it should making a sense now. ठीक है बेटा. So yes, you should know why the melting point increases in this region, because of the increase in the number of delocalized electrons, strength of metallic bonding increases. Why the melting point of silicon is the highest? Because of its giant molecular structure. It has a strong covalent bonding. Why the melting point of sulfur is greater than P4? Because of its higher MR and bilkul, that's it. Okay, so that's how you're going to relate the melting point, and I'm sure that the point is quite clear. Make sure कि non-metals में you have to think about the strength of van der Waals forces जो कि MR पे depend करती है. Non-metals में ऐसा metals में आपको strength of metallic bonding, जितने delocalized electron ज्यादा उतना melting point ज्यादा. ठीक है, कुछ जगहों पे you can see that sodium and जो मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम वो थोड़ा सा एक जैसा ही ड्रॉ हुआ है. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. थोड़ा सा आपको हायर साइड पे ड्रॉ करना है ना. नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ठीक है बेटा. We know that metals are the good conductor of electricity. ठीक है. Metalloids are the semiconductor and non-metals are non-conductor. तो तीनों बातें हम लिख लेते हैं. ठीक है. तो सोडियम, मैग्नीशियम and aluminum are metals and they are good conductor. Silicon, metalloid, and it is semiconductor. In a similar way, आपके पास the last one is phosphorus, sulfur, chlorine. They are non-metals, and non-metals are non-conductor, and they do not have any free electrons. ठीक है. They are non-conductor. तीनों बातें याद रहेंगी बेटा. अच्छा, from sodium till aluminum, the conductivity should increase or decrease in this region. Increase or decrease. Electrical conductivity किस चीज पे डिपेंड करती है? Why metal conduct electricity? Delocalized electron. So if you have more delocalized electron, it should be a good conductor. ठीक है? Conductivity depends on number of delocalized electron. So can I say that from here till here, the conductivity increases? और रीजन क्या है? मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और delocalized electrons. ठीक है. मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मोर delocalized electron. That's the main reason. ठीक है. So if I draw it on the graph, जनाब, this is conductivity on the y-axis. You can write the proton number on the x-axis. So जनाब, सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम and the magnesium से ज्यादा
एल्युमिनियम। ठीक है, सो दिस इज Na with one delocalized electron, Mg, two delocalized electron, aluminum, three delocalized electron, and then you have somewhere here silicon being a metalloid semiconductor. ठीक है, and then you have phosphorus, sulfur, chlorine, phosphorus, sulfur, chlorine, नॉन कंडक्टर। देखिए मैंने बेस लाइन पे ड्रॉ किया, कंडक्टिविटी जीरो, तो लिटरली दे हैव अ जीरो कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपको बेस लाइन पे ही ड्रॉ करना है इन तीनों को। ठीक है, सो यहाँ पे मार्क भी कर लेंगे, दे आर बेसिकली नॉन कंडक्टर, इट इज सेमीकंडक्टर, and this is basically metals are the good conductor. ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी समझ आया, मैं समझा पाया आपको बेटा? Fine. So you have to think about metal, metallite, and non-metal. As the number of electron increases within a metal, the electrical conductivity increases. Okay. Silicon is basically a metallite, so it has an intermediate electrical conductivity. हम इसे semiconductor कहते हैं. And all non-metals are non-conductor of electricity. At this stage, we're done with all the physical properties of uh, or all the physical properties of these period 3 elements. Okay, you can see in this section the graph of all these graphs have a, besides the graph of this atomic structure, this is a normal trend, decreasing or increasing. We usually study this type of graph, either decreasing trend or increasing trend. But you can see the graph of this ionic radius is something very different. We haven't done this type of graph before this, because we have technically we are drawing two different trends on a same graph paper. No, the trend of positive ion is different, the trend of negative ion is different. हमने उसे एक ही ग्राफ पे ड्रॉ किया है। इन अ सिमिलर वे आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ भी मतलब नॉर्मल नहीं है, इट इज अ इंक्रीजिंग ग्राफ विद टू एक्सेप्शनल वैल्यूज। ठीक है ना, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 और ग्रुप 5 और ग्रुप 6। ठीक है, तो टू एग्जेम्पशंस के साथ साथ दिस इज अ ट्रेंड, इंक्रीजिंग ट्रेंड। एंड देन मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, अगर हम इंडिविजुअली समझ के नहीं आते इन चीजों को यहाँ पर, तो आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू रिलेट विद दिस ग्राफ कि व्हाई सल्फर हैज मोर melting point as compared to phosphorus or chlorine. In a similar way, electrical conductivity graph is okay, but it is still something very different. ठीक है, so let's see कि हमें कोई फायदा भी हुआ ये पढ़ने का या नहीं। periodicity, okay, which graph? Which diagram represent the ionic radius? Yes, positive ions and then the negative ions. So the right answer is C. You remember Na positive, Mg2 plus, Al3 plus, Si4 plus, and then you have Sp3 minus, S2 minus, and Cl1 minus. Okay. Which graph? 1 mole of magnesium, aluminum, and sulfur are completely burned in an excess of oxygen. This is the reaction with oxygen, not the graph of physical properties. We'll do it. Okay. The sketch show the variation of physical and chemical properties with another with the group 2 element. No, this is a comparison with the group 2. Okay, Janab. The graph shows the variation of properties of the first 20 element in a periodic table with the atomic number 1, 2, and then 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Um, which property? Very good question. It is a good question. In fact, do I surprise you? It's a graph of a melting point. How come? Because in periodicity, we studied element with the proton number 11, 12, 13 and onward. ठीक है? Look at this. क्या यही ग्राफ हमने नहीं पढ़ा अभी for melting point? Remember, sodium, उससे ज़्यादा magnesium, फिर aluminum, silicon. This is silicon is on the top. So why are you looking at this area? We haven't done this. We studied the property of period 3 element, and the period 3 element is started with the proton number 11, which is sodium, going till 17 or 18, which is argon. So I think now you can relate this is the graph of a melting point. That's how they're asking the same graph wale question in so many different ways. So memorizing the shape of the graph, knowing the reason why this graph is like this, you should practice it in a different ways. So इसको अच्छे तरीके से आपने practice करना है. Okay, पढ़ लेते हैं. The highest oxides of the element sodium, chlorine separately added to water, which property? ठीक है, no, this is about the pH. Okay, which diagram show the variation of the metallic radius are of the group 1 element lithium, sodium, potassium, and rubidium with the increasing proton number. Atomic radius down the group. Atomic radius down the group. It increases or decreases. बढ़ जाता है तो बढ़ने वाला रेडियस कौन सा है बेटा? I think the right answer is an A. Why? Because यहाँ पर इन्होंने दो एलिमेंट का रेडियस एक जैसा लिखा है. It's not possible. If you have a sodium, sorry, एलिमेंट कौन कौन से हैं? Okay, lithium, lithium के नीचे lithium, हाँ, and rubidium. So down the group radius increases, but they have drawn two elements with the same radius. So this is not possible. So right, the closest option is A. Okay, the trend in the three physical properties of the elements sodium, aluminum, magnesium, sorry, are shown in the graph. Okay, which property is not illustrated? Can you please mark this? मैं graph को number दे रहा हूँ. Graph number 1, graph number 2, and then graph number 3. Can you please let me know which property is graph number 1? Shape से match करो अपने graph की. Graph number 1, which property is graph number 1? So yes, it is atomic radius. Good. Down the group, it decreases. Okay. Graph number 2. Good. Melting point. मैं इसलिए ये इतना time spend कर रहा हूँ कि graphs are important. All other reactions are exactly the same as O level. So we can just go through the notes and we can just copy those notes. और वहां से तो हमारे लिए मैं यहाँ समझा दूंगा and then I upload the notes and you have to just copy those notes. So वो आराम से हो जाएंगे. The last one is yes, this one is the ionization energy. Sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus. They draw it half. So you can see that this is sodium, this is magnesium, this is aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, and then you move towards the chlorine, again top. So ये zigzag वाला graph है. So which property is, so electrical conductivity is not drawn. Okay? And you should know how to draw the electrical conductivity. आसान मुश्किल. This is basically I remember we done this one in atomic structure as well, and I gave this one in the atomic structure test as well. Remember? So this is a question in which you have to basically आपको दो properties का comparison करना है. पहले तो मुझे बताएं what is electronegativity? Electronegativity is the power of an atom to attract a bonded pair or a pair of electrons. ठीक है? Electronegativity is the power of an atom to attract a pair of electron towards itself. Now,
electro elect sorry, the ionization, sorry, electronegativity trend is exactly the same as the trend of ionization energy. Left to right increases, down the group decreases. So from left to right, the electronegativity value should increase. So sodium से ज्यादा magnesium, magnesium से ज्यादा aluminium, और aluminium से ज्यादा silicon. यानी now you have to read this graph in two ways. सबसे पहले आप इस ग्राफ को वर्टिकल डायरेक्शन में सही ट्रेंड पिक करेंगे. सही है. वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रेंड क्या होना चाहिए? सोडियम से ज्यादा एल्युमिनियम. ठीक है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्युमिनियम से सोडियम से ज्यादा, सॉरी, मैग्नीशियम, एंड मैग्नीशियम से ज्यादा एल्युमिनियम, एंड देन सिलिकॉन. इस डायरेक्शन में इंक्रीज होना चाहिए. यहां देखिए इन्होंने सिलिकॉन फिर सोडियम. दिस इज रॉन्ग. ए इज रॉन्ग. देखिए ए में वर्टिकल वाई एक्सिस पे द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज फॉर सिलिकॉन, एंड देन यू हैव sodium, then you have magnesium, and then you have aluminum. This is not following the exact trend. ठीक है. लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीजेस, तो सोडियम से सिलिकॉन तक बढ़नी चाहिए. अगर हम इसकी बात करें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, यस, वर्टिकल डायरेक्शन में ऑन द वाई एक्सिस द ग्राफ इज राइट. द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज सोडियम, then you have magnesium, then you have aluminum, then you have silicon. So this graph is right in terms of y-axis electronegativity. Silicon, this graph is wrong. The smallest value is for silicon on the y-axis. This graph is again right in terms of electronegativity. So these are the two options that we are not thinking about because the y-axis value is wrong. Now, out of B and a D, there is one option which is right in terms of atomic radius. Now, atomic radius down the group decreases, कम होता है. यानी अगर down, sorry, left to right atomic radius decreases. यानी if you have sodium, magnesium, aluminium, silicon, ठीक है. So आपके पास सबसे smallest कौन सा होना चाहिए? सिलिकॉन. और सबसे लार्जेस्ट कौन सा होना चाहिए? सोडियम. सो आपके पास सिलिकॉन पहले होना चाहिए, फिर एल्युमिनियम होना चाहिए, फिर मैग्नीशियम होना चाहिए, और फिर सिलिकॉन होना चाहिए. तो कैन आई से दैट द बी इज द राइट ऑप्शन? यू कैन सी इन दिस डायरेक्शन द स्मॉलेस्ट रेडियस इज फॉर सिलिकॉन, उससे बड़ा एल्युमिनियम, उससे बड़ा यू हैव मैग्नीशियम, एंड द लार्जेस्ट वन इज फॉर sodium, and this one is wrong. So they, in a recent year paper, they asking one MCQ in a way that they asking two properties on a single graph. One value is plotted on a y-axis and one value is plotted on a x-axis. To solve these type of question, first of all, या तो y-axis की वैल्यू को सॉल्व करके दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, फिर x-axis वैल्यू सॉल्व करेंगे, so you can eliminate the other option as well. So you have to think about in two different ways. Select one. This is actually the one. देखें. सबसे पहले चलें, let's talk about the melting point. Melting point increases from sodium till, sorry, हाँ, melting point मैग्नीशियम से ज्यादा एल्युमिनियम, और सबसे ज्यादा melting point किसका होना चाहिए? silicon ka. There are two options in which you have the highest melting point of silicon. You can see we can easily eliminate A and a D. Done. अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की. अगेन सोडियम, सॉरी, मैग्नीशियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम से ज्यादा होनी चाहिए सिलिकॉन की, और सबसे ज्यादा होनी चाहिए फॉस्फोरस की. मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस. Left to right, the electronegativity value increases, no exception, nothing else, just increases. Like the ionization energy value increases from left to right. Again, as I said, recent year mein, you can see this is a question from, I think year is given. Yeah, 2014. 14 is a recent year for us. आपके लिए नहीं. ठीक है? So yes, again, melting point top to bottom. So highest melting point is for silicon. all all of the silicon at the highest, you can see. So yes, सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम, ठीक है. मैग्नीशियम मेल्टिंग पॉइंट ड्रॉ करें अगर हम, सो यू हैव मैग्नीशियम एंड देन यू हैव एल्युमिनियम, या तो बराबर या फिर ऊपर, एंड देन यू हैव द सिलिकॉन ऑन द टॉप, एंड देन यू हैव फॉस्फोरस. सो आई थिंक दिस ग्राफ इज ओके, है ना? This graph is okay. This graph is wrong.
Okay, and this graph is wrong. Clear? First आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम एल्युमिनियम, है ना? और फिर याद है ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी का? सो यू हैव द आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड सोडियम, then you have magnesium, then you have aluminum, and then you have silicon, and then you have phosphorus. So the highest ionization energy is for phosphorus, the lowest one is for aluminum. कौन सा ग्राफ सही लग रहा है बताइए? The highest one is for phosphorus and the lowest one is for aluminum. So the graph B is correct. I know it. Melting point B में मेल्टिंग पॉइंट कम दिया हुआ इन्होंने सिलिकॉन का एक्स एक्सेस पे। हाँ, तो इसका राइट ऑप्शन फिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, मैंने गलत मार्क गलत कर दिया। दिस वन इज राइट, है ना? दिस वन, ये मेल्टिंग पॉइंट में ये वाला भी ठीक है, ये वाला ठीक नहीं है। देखिए क्यों ठीक नहीं है ये वाला? क्योंकि एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है, मैग्नीशियम कम, एल्युमिनियम उससे ज्यादा। सही तो है, ये कम बना हुआ है ना मैग्नीशियम, देखें। मैग्नीशियम नहीं, ये वाला नहीं था, ये वाला था। यस, मैग्नीशियम इज लोअर देन दिस। ठीक है, तो मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद ठीक है। सो द राइट ऑप्शन, सॉरी आई एम सो सॉरी, यहाँ सिलिकॉन की वजह से दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। सो द राइट ऑप्शन इज सी। ठीक है, गुड, सही है जी। और आगे चलते हैं एंड सम मोर graphical question. I don't think so. Yeah. Okay, ji. Atomic radius. Left to right, atomic radius decreases. Elements are magnesium. पहले मैं list down करता हूँ जनाब. And then you have aluminum. Then you have silicon. Then you have phosphorus. These are the elements. So if I talk about the atomic radius decreases. Okay. So the smallest one is for phosphorus. ये सबसे smallest होगा radius में. And magnesium is going to be the largest. फॉस्फोरस, उससे ज्यादा सिलिकॉन, उससे ज्यादा एल्युमिनियम और सबसे ज्यादा मैग्नीशियम। बताइए जनाब। फॉस्फोरस उससे ज्यादा, फॉस्फोरस के बाद हमारे पास सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। यस, ऑन द वाई एक्सिस दिस वैल्यू इज करेक्ट। मेल्टिंग पॉइंट फॉस्फोरस, melting point, highest melting point is for silicon. Yes, then the lowest one is phosphorus. The C is the right option. Okay, so first of all you have to think about the value on the y-axis. The other one you have to think about the value on the x-axis. Again, electronegativity in the first ionization energy, we done this one. Acha, as I said, you can see they always asking like a question in which they're asking two properties, one on a y-axis and one on a z-axis. And I have a feeling that there must be a question present in an exam बिल्कुल इसी तरह का जैसा आपसे पूछा जा रहा है. This is the graph of melting point given है. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन क्या है? Which element could be sodium? C, yes, C is sodium. This must be a नॉन मेटल, है ना? तो ये तो उन्होंने ये पिछले ग्रुप का नॉन मेटल इन्होंने ड्रॉ किया है पिछले पीरियड का. ठीक है. दिस इज सोडियम एंड देन मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम, देन सिलिकॉन और फिर फॉस्फोरस, P4, S8 and so on. ठीक है. So you can see this is the region where it is familiar with the graph that we have done in our. Again, I'm not going to go through this graphical question more. अब आप खुद कवर अप करेंगे. The element magnesium and sulfur from the doubly charged ion. ठीक है जनाब. How do the atomic radius and their,
Okay. Now, magnesium and Mg2 plus. Which one is greater, Mg or Mg2 plus ion? Mg is greater. So this one is correct and this one is correct. Done. Option C and D are wrong. Now, sulfur and sulfur 2 minus. Which one is greater? Good. Excellent. So B is the right answer. Atomic radius electronegativity. I'm sure that you can do it. There are so many questions of this format. है ना? नजर आ रहा है ना? Melting point with the first ionization energy repeated है. This one. The relative magnitude of the property X5 element is shown below. Okay, Janab, PQRST are on period 3 consecutive element. Which raw shows a correct pairing of properties X and element R? R element और उसकी property को pair up करना है. I think this is a graph of a melting point. Am I right? R? हाँ, R aluminium नहीं silicon होना चाहिए. That's true. Second ionization. नहीं नहीं मुझे A लग रहा है ना? That's true. It seems like it. है ना? Sodium, magnesium, aluminum. The electrical conductivity is highest for aluminum, and then silicon have an intermediate electrical conductivity value, and then you have non-metals. ठीक है? इन्होंने ड्रॉ किया है, डजंट मैटर. ठीक है ना? हम हमसे ड्रॉ करने के लिए आएगा तो वी हैव टू ड्रॉ इंटरमीडिएट इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. ठीक है ना? टेक्निकली ये बात समझ में आनी चाहिए कि इंटरमीडिएट मेटोलाइट यानी सेमीकंडक्टर का मतलब है कि इट इज समथिंग बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल. तो हम ड्रॉ करेंगे. वैसे टेक्निकली दिस दिस इज द ओनली प्रॉपर्टी. अदरवाइज अगर सिलिकॉन के साथ मेल्टिंग पॉइंट गिवन होता तो वो आंसर होता. ठीक है? क्योंकि ग्राफ इज ऑलमोस्ट लुक लाइक सेम. Okay, the graph shows a trend in the four physical properties of the element, excluding argon. Which graph has the electronegativity on the y-axis? Yeah, मुझे ये आंसर नहीं, मुझे सबको मार्क करके बताओ. This one is melting point. This one is atomic radius. Good. देखो मेरी कोशिश ये है कि इस क्लास में आपको याद हो जाए ये सारे ग्राफ बिकॉज एग्जामिनेशन वेटेज है इसकी अच्छी खासी. Ionization energy, especially the first ionization energy, and this one is basically क्या चीज है? Electronegativity increases from left to right and it decreases down the group. Last question for today. आज का आखिरी सवाल. Question number 99. SiO2 bonding. SiO2 is giant. Yes, so it is giant with a covalent bonding. SiCl4 is simple with a. So B is next option. Okay. So next part of this chapter is basically about the chemical properties in which we are going to do the reaction. Almost 90% of the reaction are exactly the same as O levels. So we are going to just quickly go through all those reactions and wind up this.